introduction of our keynote speaker, Mrs. Rajni Basim ma'am. So here's to her short introduction. It is an honor to welcome our speaker today, Mrs. Rajni Basim ma'am. She's an educator, she's a career counselor, and a true guide to the youth. Since her college days, she has been very passionate about helping students and choosing helping them to choose the right career path as per their interest and potential. She believes that guiding the youth is not just for their personal growth but also for the nation's progress. She also has keen interest towards women empowerment. Now, let me tell you about some of her degrees that she has. She is postgraduate in commerce and education. She has trained school and college students as well as future teachers. She has a very special ability and a very special method of oral psychological counseling that has helped many parents and students to overcome confusion and pressure regarding careers. She has conducted numerous workshops and worked with universities like Jamia Millia Islamia, which is a very big name in itself. Now, and she started her three ventures after in 2017. Anglais Study Overseas. This venture basically focuses on the study overseas students who are interested in pursuing higher studies from abroad. Then is the second. Then is second Miraki School of Higher Education. In this particular organization, she helps students in developing soft skills or any skills that they're interested in. Then is Veridical Technologies, wherein she helps students in training and provides internships where I and Jatin Singh Bhatia are working as interns. All these organizations are completely focused on education and skill development. She is a truly visionary leader, and we welcome her with whole heart. And now we can begin the sessions. Please feel free to ask as many questions as you want. She's here to answer all your questions and make sure this session is as interactive as possible. Thank you so much. We may begin the session. Thank you, Kushi. It's really a lovely, introduction. Thank you very much. But I would like to know the faces, Thank you, see ma'am. the faces, please. Be there. Can you keep your cameras on mode? Actually, ma'am, I guess Navya is out somewhere for her internship, Navya Nain. And Paridi is also busy somewhere. She'll be switching her camera on as very fast soon. Fine. No issue. So, what we can do, I think because the strength is quite less, so one-on-one interaction is quite possible. And if you people are open up to discuss your personal things here at this platform as well, then I guess I will be able to, give you a proper guidance, what I used to give to the students who used to get or meet me face to face. So anyways, this platform is, again, I'm saying that same level. There is no difference between the face to face and the virtual mode. Again, this is face to face. So thank you so much. So I guess we met in you all are from tips, right? Fine. So we met earlier. No ma. Yes, Hansika. Hi. We met earlier. No. I No. was not in tips. Okay, No, Uma. no. Yes, This is I my didn't first see time. your Yeah. face there. Yes. Yeah, this is my first time. But I guess Anika, perhaps. Fine. So let's start with I'll use the name. Just a moment. Let me check the names, please. Okay. Here is Akriti Sharma. Akriti. Hi, Akriti. Where are you? Hello, ma'am. Good afternoon. Yes. Good afternoon. First of all, I would like to say, consider me as your friend. और मुझे ये बताना कि खुशी खत्री ने आपको कितना poke kiya ki nahi, you will have to attend this session. This is the No, matter of that my is not the internship. thing. Just poked me for like switching on the camera. Okay, fine. So you all are willingly here. You are participating, Yeah. right? Definitely, yeah. थैंक यू बिकॉज अगर आपका विलिंगनेस नहीं होगा और आप फोर्सफुली यहाँ पर अटेंड कर रहे हो सेशन, तो वो सेशन का कोई बेनिफिट नहीं होगा. करेक्ट? अनिका, आर यू Yes. ओके? श्योर? इज देयर समवन अराउंड यू? Yes.
No, no, ma'am. No? Okay, fine. So, I guess one by one, technically, I'll consider the name alphabetically and accordingly we will discuss, right? तो आप ओपन अप हैं इस प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करना. मैं दो तीन चीजें आपके साथ बहुत अच्छे लेवल पर डिस्कस करूंगी कि ये ऑरल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स ये तभी पॉसिबल है जब आप मुझे अपनी हर एक चीज शेयर करते हो. जितना आप शेयर करोगे उसके अकॉर्डिंगली आई विल बी एबल टू टेल यू ओके व्हाट वुड बी द बेस्ट फॉर योर करियर और नॉट, वेदर फॉर द हायर एजुकेशन और योर स्किल्स और द जॉब व्हाटएवर. एंड दिस इज नॉट इजी टास्क, राइट? उसके लिए आपका अभी तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होगा हमारे पास. यूजुअली व्हाट हैपन 2 to 3 hours एक बच्चे की जर्नी पे लग जाते हैं. अभी आई गेस आप 21 अराउंड 20-21 ईयर ओल्ड होंगे, राइट? एम आई राइट? और 2021 की जो जर्नी है आपकी, जो आपका नेचर, जो आपका बिहेवियर, जो आपका फैमिली सर्कमस्टांसेस, आपके थॉट्स, आपका लाइक सराउंडिंग्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स, बहुत कुछ आपके माइंड में चलता रहता है. उन सबको वन बाय वन अंडरस्टैंड करना इट विल टेक टाइम, राइट? बट आप में से जो भी इनिशिएटिव लेना चाहे, अगर मैं अल्फाबेटिकली बोलूंगी उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इनिशिएटिव लेना चाहते हो, सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस कर पाऊँ और जिससे आपको बेनिफिट हो फ्यूचर में, राइट? तो लेट्स स्टार्ट नाउ. फाइन. सो आकृति शर्मा, प्लीज go ahead with your first. I would like to know about you, right? So I'm from BIT Mesra, Birla Institute of Technology. Akriti Sharma. Okay. Yes. Fine. Fine. Yes. And I'm doing a bachelor's in computer application from there. This is my final year. And yeah, I'm preparing for like I want to do masters from Germany, from outside. Okay. Okay. And during your bachelor, what did you do? Like I did a internship in CCL as Okay. well as done data science skills From where? from like an Online? Udemy. Online. Right. Yeah. Any project which you have done under the data science? See, I'm actually preparing for the research paper like this year. Okay. So I'm looking forward to on that. Research paper on which particular topic? On actually data science only. Okay, data science. Are you going to publish this research paper? I'm trying to like I'm in consult with my professors so that. Fine. And this duration of data science program, what is the duration from Udemy? 6 months. That's it. Are you Yeah. good in maths? Like a bit. Little bit. Okay. And what about the numericals like the number system, regression analysis, ratio analysis? Yeah, statistics is a good Statistics subject for part, me. good. And the mathematics part? A Conceptual bit understanding? tricky. Yeah, concept is clearly understandable. Is there any project you have done under data science? Abhi to I Okay. And what languages you have studied during your BCA? You know, Java. I know the C, C++, Java. And Python. Okay. Is it core Java? Yeah. Any project? No? Fine. So, Akriti, in nutshell, what should I say? First, if you are planning for Germany, pehla point ye final year hai, right? And for the masters, you will have to clear B1 and B2 level, depending upon the program. कि आप masters कौन से program में? Because in India, there are few old concepts like the MCA and the MBA or MSc IT. Clear? But if we will talk about foreign universities, international education system, then they are the special one. They are, providing the special courses. Again, we need to check which particular program, depending upon the curriculum, which could be best suitable for you. Say, I'll give you one example. For example, you are not good at, in maths. And whatever the topic you will choose that require
huge knowledge or the complete detailed knowledge of the mathematics concepts, right? So for that we need to check, as I told you, you can note down B1 and B2 level depending upon the program which you will have to pick, and you will have to focus on your portfolio. Right now you are lacking in your portfolio, so only the data science from Udemy will help you to complete your portfolio. Second, the research paper, and the research paper publication should be either the national or the journal one should be in the national or international, and that must cover the ISSN board. There is one number. So if you will publish, that will give you help in studying overseas if you want to become a professor, right? You want to enter into corporate sector, or you want to become a professor in a teaching line? In the corporate sector. Corporate sector. And what will then, how these research papers will help you in your corporate sector? Well, that is something different. Anyways, if you will write some research paper, that will give you only, you can say, will enhance your knowledge. That is good. If you want to enter into the corporate sector, that is not a bad idea, right? You will get the exposure, because if you are planning for the master from Germany, like any country, then what we need to pick, there are few courses which are actually based upon some MS with research. If you will plan and write down more papers like the journals, research papers, then this will also give you boost in completing MS with PhD. So before finalizing, just consult once again in detail if you can discuss with me, or if you want to discuss with any of the counselor. So this is what my opinion in nutshell. So the BCA one, again, make so many, means n number of projects, whatever you can make in the final year. And you know about the languages, just make your portfolio like the website, a landing page where you can land all the points which you are good enough, you have a full command. And under the data science, again, the technical part, the project one. So on that basis, one is this aspect, because that you are doing BCA. So if you will go abroad, they will consider under BCA what the different projects you have picked. Data science was not your part, right? But if you have taken from Udemy, so there is not such validity or sanctity by opting only the online programs, which will help you only giving the certifications, right? So in depth, they will ask you the technical questions which you might be lacking in near future, right? So just focus on the complete data science projects and a few of the projects related to your Java, and the backend either the Java or the PHP. And because now concepts are n number of programming languages are there, right? Yeah. So just check what is actually going on in Germany, because we are 100 years far away from the international market, right, in terms of education itself. So if you want to get into you want to enter into the IT sector in Germany, so these are the 3 points where you will have to focus. Am I clear with points? Thank you, Any ma'am. doubt, Thank you so any much. query? No, ma'am. Okay, thank you. Ananya, are you there? No. Next is Anika. Ananya has gone. Anika Sharma, you are a candidate of BJMC. Yes, And your ma'am. question, if you have any question, ask here. No. And your dream career is in PR. Yes, So ma'am. first, let me know about you. Ma'am, I'm from TIPS. My name is Anika Sharma, Trinity Institute of Professional Studies. I'm interested in PR, and also I'm thinking to do it with the language. So I was thinking to go with German language. Okay. Yes, Right ma'am. now, the idea comes in your mind, or No, earlier you no. were aware? Earlier I was aware. Okay. You are also interested to go to Germany, right? Yes, ma'am. What is the purpose to go there? For the higher education? Yes, ma'am, but not for education. I was thinking to do my education from here only, and also the language and everything. Mhm. After that, maybe I'll go. You will plan to go in German and settle over there? That is from the settlement point of view? Yeah, you can say. So have you done any research regarding this settlement PR part in Germany?
Ma'am, not in the PR part, but right now I am researching about the language and everything, so I will take the Okay, I admission would in. like to add here. See, if you want to continue your higher studies in India, right, and planning for the German language, like up to B1, B2 level, and then the A1 level, fine. So that is good. But for the permanent residency, this PR is something your public relationship, right? What you have mentioned, the dream career. Hmm? And the another PR which I'm talking about, that is a permanent residency. So in German, there is very much difficult to get the PR, right? So the situation is little bit difficult. If you will complete your master here and then you will plan for abroad, then you might face challenges, because after completion of master degree, the you will not get visa even. In We can say the maximum rejection in terms of visa, reason being, in their mind there is, if the candidate is or has completed his or her masters from India, and what is the reason to plan for abroad, means for the settlement or the job. Chances would be, if within India, through any LinkedIn profile or any networking, if you will find any employer, and from that area, from German country, you will find a company who will directly approach you or hire you for some specific profile, then on the basis you can plan for work visa. And second option could also be there, Kushi, just a moment. Second option could also be there. Suppose if you complete your master, then if you will be interested in the research part, then you will get that benefit, like after completion of the masters from India, planning for PhD research, that would be better. In that case, they will welcome you, right? And now in terms of PR, is there any question? How No, can ma'am, not you really, go with but this PR? How can you go with this PR? What is your plan? ma'am, right now I'm confused. But That's why we are here. the goal is clear, like I have to go for PR only. Is it public relation you are talking about? Yes, ma'am, public Okay, relations. okay. So any companies, have you figured out any company? Ma'am, right now I'm doing internship, but not in PR, in social Mm-hmm. media handling I'm doing. I was unable Okay. to find. What do you understand by this word PR? Ma'am, dealing publicly on behalf of an organization or a company, Is maintaining the that so? distance between the company, the organization, and the audience, the public. Okay. How can you do that? What are your specialities? What are you good at? Communication. Communication? That's it. Communication means add-on advantage. If you can speak well, you can present well, that is only the added advantage you will be having. But you should know about first the company, the target company. Where would you like to go? Is it into the branding, brand management, branding of say telecommunication, branding of Reliance, branding of FMCG goods, branding of education, branding of which particular company? Which sector would you like to target? Accordingly, a public relation PR is not only the you can say the cover to cover the gap between the client, customer, and the company. It is, you will have to work on the complete branding of the company. It's just like image consulting, as we are focusing on our image, right? So हमारी image consulting work होती है, because वो भी एक PR का काम है. Right now, as Khushi is doing, she is doing the PR work, because she is actually you can say, she has introduced me, and she had worked for me, and what she's doing, she is actually doing PR of Rajni Basin only. And I didn't give her all the three companies.
otherwise the project would be very vast. So that was the minor part, a very small topic. But once you will enter into the PR, it means you will have to handle all those things, how to do the marketing, how to position the products, how to position the person, and moreover one thing very important, आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है एंड एवरी नेगेटिविटी इज देयर. किसी का अगर छोटा सा रिमार्क भी आ जाता है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है उस कंपनी के लिए, राइट? यस, इन केस अगर कंपनी डेफिनेटली उनके जो वैल्यूज हैं वो सही नहीं है, उसके लिए तो रिमार्क्स अगर नेगेटिव है, रिव्यूज नेगेटिव है, तो डजंट मैटर. बट व्हाट इफ द कंपनी इज डूइंग गुड, कंपनी इज एक्चुअली doing wonders, and still there is a negative remark from the public side. So how to handle those things? So that is again a new part. आप ये जनरली अपनी स्टडीज में नहीं सीख पाते हो, और एक्सपीरियंस में भी कोई भी कंपनी आपको इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं देती है, राइट? तो इफ यू वांट टू एंटर, तो इट मीन्स कि आप मास्टर्स जो है वो ब्रांड मैनेजमेंट में करो, या फिर पब्लिक रिलेशन एंड कम्युनिकेशन, और पब्लिक रिलेशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. और उसमें भी आपको करिकुलम स्पेशली देखना पड़ेगा कि कौन सा करिकुलम जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेबल होगा. एंड अलॉन्ग विद दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एक्चुअली. तो मार्केटिंग के साथ साथ आपका BGMC के आप स्टूडेंट हो, डिजिटल मार्केटिंग यू माइट बी अवेयर, बट वो डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने जितनी भी जो इंटर्नशिप्स के दौरान की होगी, या स्मॉल पार्ट ऑफ द SEO, स्मॉल पार्ट ऑफ द इंस्टा पोस्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ द लिंक्डइन पोस्ट, लेकिन वो आपका PR या डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट प्रोफाइल नहीं है. व्हाट यू नीड टू डू, आप जिस भी कंपनी के साथ वर्क करना चाहते हैं उस कंपनी का कंप्लीट DM पार्ट, जो उनका प्रोजेक्ट है, कोई भी एक प्रोजेक्ट, उसका कंप्लीट थॉरली जब आप ये कर चुके होंगे, राइट, अलॉन्ग विद दैट आप मास्टर्स डिग्री का प्लान करोगे, तो आपको एक्सपोजर भी मिलेगा. और उस केस में आप एटलीस्ट एक कंपनी टारगेट करो, मीन्स सेक्टर को टारगेट करो कि आपका क्या फैशन इंडस्ट्री की तरफ टारगेट है, क्या जैसे गुची है, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, आप उनको टारगेट करना चाह रहे हो, राइट? या फिर आप टेलीकम्युनिकेशन को टारगेट करना चाह रहे हो, जैसे मैंने बोला FMCG गुड्स है, रिलायंस कंपनी है, ONGC कंपनी है, कौन सी कंपनी को टारगेट करना चाह रहे हो, तभी तो आप कुछ उनको ट्राई करोगे ना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए. तो ये सब चीज़ें जो है फैक्टर्स, इसको ध्यान में रखना. और डिटेल में अगर कुछ क्वेरी हो तो यू कैन आस्क, और अभी अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन ऑल्सो आस्क. No, ma'am, it's much clearer now. Right? I Yes. hope you are satisfied. Yes, ma'am. Thank you, Anika. Next is Hansika. Hansika Satwani. Okay, Rajwani is not there. You are also candidate of BJMC. Hi, Hansika. How are you? Yes, ma'am. Hello, good afternoon, ma'am. I'm doing good. How about you? Looking pretty good now. Yes. I'll read your question. Your question was, what advice do you have for someone new to the industry of corporate communication? And again, dream career is public relations and corporate communication. Correct. तो I guess जो मैंने अनिका के साथ डिस्कशन किया है, तो ये आपकी भी डिस्कशन को काफी I was taking notes also. Okay, now I have two personal questions also I want to Yes. ask. yes. First one was like I was thinking to pursue for higher studies, and also I'm like confused between two things, whether I should first like explore career paths in public relation and corporate communication, then go for higher studies, or should I just complete my bachelor's and then start with my master's and then go for like corporate sector. Fine. In that case, my advice is first complete your education. Don't take any gap, because if you will plan good companies, they will not accept a student, a person from like who is having the gap year. And especially whatever the department you will pick as a public relation and corporate communication, means you want to enter into the corporates, so gap will not be accepted. And whether you want to enter into the corporate or not, but still in your education there should not be any gap, because once you will start earning, right, then you will lose your interest in a particular thing, whether that would be for the regular one, and these kind of opportunities will not come under the online and the distance. Fine. So just focus on your higher education, whether from India or abroad.
that you can discuss with us and with someone else, then you are open. And after that, during those internships, like the internships during masters, then you will get much exposure. You will be much mature, like at your 22 years of old age, and then coming to 23, it means little bit more sense to understand, observe the public, observe all the person. Because see, as again I'll go back to Khushi Khatri. We have assigned her few tasks and the challenges she faced. So once you will enter into the real industry, you will face n number of challenges, right? And if you will enter only after the graduation, then that would be difficult because your plan is to go for higher education. So plan for that, whether India or abroad. And I'll again suggest, if interested, if your pocket allows financially, you are strong enough, then plan from abroad. Because the good, even the private organizations within India, their curriculum is not that much updated, where you will find good opportunities in good companies. But yes, in international, the market scenario is totally different. But whether you will be here in India or outside international, you will have to work for yourself. इंडिया में क्या होता है, प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज कॉलेजेस में चले जाती हैं और स्टूडेंट्स को हैंडीकैप बना दिया है. कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है, और आप इंडिपेंडेंट अपनी वर्किंग नहीं कर सकते. तो ये सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट है कि इंटर्नशिप्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लेसमेंट्स के लिए डोंट कॉल द कंपनीज. लेट students find out their own destination, own they need to fulfill their own dreams, और उनकी कंपनीज उनको कहाँ जाना है वो अप्रोच करें. उससे आपका एक जो एक्सपोजर है और जो अंडरस्टैंडिंग है, या फिर जो सिचुएशंस को हैंडल करना होगा, तो वो उन सब के साथ आप एक मेंटली स्ट्रांग होते हो, चैलेंजेस को फेस करते हो. तो वो चीज़ें करो, ठीक है. मास्टर्स गैप नहीं लेना है, और उसके बाद आप किसी भी कंपनी के लिए एंट्री कर सकते हो, right? But during your graduation and your masters too, you will have to be very much strong with your portfolio. और स्टूडेंट, आईटी के स्टूडेंट जो भी हैं, अगर वो फ्रेंड्स हैं आपके, सेम पोर्टफोलियो अपना कंप्लीट कीजिए, प्रेजेंटेशंस अपनी बनाइए. आपने कितना पीआर पे वर्क किया है, किसी भी कंपनी का जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है वहाँ पर, और वो यहीं से इंडिया से ही स्टार्ट कीजिए. वो आपके सीवी, सो कॉल्ड सीवी, वो आपका सीवी कहलाता है रादर देन द रिज्यूमे, बिकॉज वो आपका एक्सपीरियंस है, राइट? तो उस एक्सपीरियंस के बेस पर आप कहीं भी सिलेक्ट होते हो. इंडिया में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट आपको करिकुलम देखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रेफर करना इंडिया और अब्रॉड, राइट? एनी मोर डाउट? Sure. Thank you, ma'am. Thank you. Jatin Singh Bhatti ji, yes. Would you like to ask any question? कोई क्वेश्चन है आपका, या सॉर्टेड है? नो मैम. फेस टू फेस जो डिस्कशन हुई थी वो सॉर्टेड है? मैम वहीं से काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो गई आपके साथ. इतना तो ऑलमोस्ट एवरी नेक्स्ट डे तो मिलती हैं, तो उसमें आप इतनी सारी चीज़ें बताते हो और सारी चीज़ें करते हो, तो वहीं पे ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. बाकी मैम ये एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे मेरा जो मेन फोकस है वो इवेंट मैनेजमेंट की साइड है ज़्यादातर. आपके जैसे वेडिंग प्लानिंग हो गया, आपके कॉर्पोरेट थोड़ा, मतलब जैसे आपके साथ अभी हम हैं, तो अगर कॉर्पोरेट साइड का भी थोड़ा एक्सप्लोर करने का है, तो हम उन दोनों के बीच में थोड़ी कंफ्यूजन है. मतलब ज़्यादातर कंपटीशन जो अभी हम देख रहे हैं वो इवेंट साइड है, तो मतलब उस तरफ परस्यू मैं अपना मेन फोकस करूँ, या फिर आपके साथ जैसे है कॉर्पोरेट साइड, तो उस पर ज़्यादा मेन फोकस करूँ? सी, ये आपकी चॉइस है. मैंने आपको एक वे दिया था, एक प्लेटफॉर्म दिया था, जिसमें कॉर्पोरेट में आप डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सक रहे हो, कर सक पाए, लेकिन आप उसको कॉर्पोरेट की फॉर्म में ले सकते थे. जैसे मैंने खुशी को भी बोला था कि कॉर्पोरेट की तरफ अगर हम एंटर करते हैं, तो वी कैन प्लान द इवेंट्स इन सच अ वे कि उनका जो जैसे सेशंस होते हैं, बिकॉज ये हमारे सेशंस बिफोर कोविड, हम कंपनीज को अप्रोच करते थे, और कंपनीज या तो वो खुद के जो ग्रेजुएशन के बाद अगर उनकी जॉब्स लग जाती है, राइट, तो एचआर के साथ हम कंसल्ट कर सकते हैं. तो वो भी कॉर्पोरेट इवेंट्स होता है, जैसे आप सेमिनार्स या कोई कॉन्फ्रेंसेस कुछ मींस अरेंज करते हो, तो वो सब कॉर्पोरेट इवेंट का पार्ट होता है. क्वेश्चन ये है कि क्या आपको एजुकेशन सेक्टर के अंडर कॉर्पोरेट इवेंट्स प्लान करने हैं, राइट?
तो अगर एजुकेशन सेक्टर के अंडर करने हैं तो वो उसके लिए आपको अपना एजुकेशन के बेसिस पर बहुत नॉलेज गेन करनी पड़ेगी. नो डाउट वी विल बी देयर टू सपोर्ट यू. अब सेकंड केस आता है जो कॉर्पोरेट इवेंट्स, जैसे कि अभी आपके पास वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आई. खुशी और जतिन, आप दोनों के पास ये इसलिए अपॉर्चुनिटी नहीं आई बिकॉज नाउ अ डेज दिस टाइम जो मंथ चल रहा है जुलाई, इस टाइम पीरियड पे कॉर्पोरेट इवेंट्स कहीं पॉसिबल नहीं है. वेडिंग प्लानर की अगर आप बात करते हैं तो मैरिजेस भी, दिस इज नॉट द टाइम जहाँ पे मैरिजेस पॉसिबल है. तो जो आपका इंटर्नशिप टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं थी, राइट. आप वेडिंग प्लानर भी बन सकते हो, लेकिन अब उसके लिए आपको नॉलेज किस चीज की चाहिए. आपको वो छोटी छोटी चीजों की नॉलेज गेन करनी पड़ेगी जो बहुत ही ज्यादा यू कैन से कि लेस एक्सपेंसिव हो. अभी अगर हम रील्स अगर आप देखते हो, आज की जनरेशन रील्स पे बहुत है डिपेंडेंट. रील्स देखते हो तो उन रील्स में भी या यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर भी ऐसा कंटेंट आता है जिसमें ये कहते हैं कि आप बहुत कम मिनिमम बजट में 10 लाख से भी बिलो या 5 लाख या 6 लाख में आप बहुत ही शानदार आलिशान और डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो बुक कर सकते हैं, राइट. अब वो शानदार मजेदार आप डेस्टिनेशन वेडिंग, आपको स्पेस मींस यू विल हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंप्लीट स्पेसेस. तो उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको ईटरीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको जो इवन अगर हम और इलेबोरेटेड करें तो हमें क्लोथिंग के ऊपर भी करना पड़ेगा, हमें जो सजावट का सामान है उसके ऊपर भी, और हर जगह जाना पड़ेगा. इट इज़ नॉट इन दिल्ली, आपको कभी जयपुर, कभी आगरा, कभी मथुरा, कभी पंजाब, कभी तमिल लाइक साउथ साइड, सबको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. इट्स अ ह्यूज मार्केट. लेकिन आपके पास कितना टाइम है, आपके साथ टीम कितनी है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. अगर आपके कॉलेज के ग्रुप में लाइक माइंडेड कैंडिडेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आप उनका ग्रुप बनाकर वाई नॉट टू स्टार्ट विद वन अ कंपनी, आप अपनी ये कंपनी खुद से स्टार्ट कर सकते हो, राइट. फिर ग्रेजुअली पहले एक स्टेप करना, फिर सेकेंड स्टेप, फिर ग्रेजुअली उसमें एक्सपैंड करना, अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने डाउन द लाइन लानी है, राइट. तो कॉर्पोरेट इवेंट्स भी आप प्लान कर सकते हो. कॉर्पोरेट इवेंट्स दिवाली, दशहरा, होली और मेजर फेस्टिवल्स क्या हो सकते हैं. सॉरी, अवार्ड फंक्शंस होते हैं बहुत सारी अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन के. फंक्शंस. यस, अवार्ड फंक्शंस जो होते हैं उसके लिए टाइम फिक्स नहीं होता है, राइट. और वो अवार्ड फंक्शंस आपसे क्यों करवाएंगे, आप फेस नहीं हो क्या. आप अपना पोर्टफोलियो बनाया, आप अभी फाइनल ईयर में हो ना, अभी से अपना पोर्टफोलियो बनाओ और एक्सप्लोर करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, नॉलेज गेन करो. जितना नॉलेज गेन करोगे शायद आप एक्सपीरियंस पर्सन से भी ज़्यादा अपने आइडियाज़ के साथ लोगों तक जा सकते हो, एंड विद द वेरी मिनिमम फीस, वेरी मिनिमम प्राइजेस. तो आप उसको प्लान करो. और जो कमिंग अभी टाइम है हमारा, दिस इज वी आर इन जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिवाली, दशहरा, छोटा मिनी कुछ भी फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो. तो 2 मंथ्स यू आर हैविंग, राइट. उस 2 मंथ्स में प्लान करो कि मैं कंपनीज, जैसे हमने आपको बोला था मेल्स करना है, आपको उनको कांटेक्ट करना है, आपको लिंक्डइन से कांटेक्ट करना है, आपको कॉल कनेक्ट करना है, आपको एचआर के साथ कनेक्ट करना है. तो वो हमारा एजुकेशन सेक्टर था या फिर आपका कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप जाते हो, सिस्टम वही है, सिर्फ डायलॉग चेंज हो जाएंगे, कंटेंट चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी, द सिस्टम इज सेम, ठीक है. तो इफ यू हैव स्टिल प्लान्स आप ये कर सकते हो. मैंने आपको एक चीज और ऐड करी थी, very soon, as I have already launched 2 departments. One is for the recruitment and another is for the marriages. कंपनी डोमेन एवरीथिंग इज सेटल्ड, और उसके साथ साथ हमारा भी मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 or 2 months ये हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे. एंड इन फ्यूचर वहाँ पर अगर लगेगा तो इवेंट, और वो मैरिजेस का हो या कॉर्पोरेट्स का हो, तो स्पेशली तो फर्स्ट मैरिजेस का है क्योंकि मैं मैरिज वाले पार्ट पे चल रही हूँ. तो वो इवेंट्स, अब उस केस में भी वाई फ्रॉम द एजुकेशन टू दिस, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन. एजुकेशन सेक्टर से मैं मैरिजेस वाला भी प्लान कर रही हूँ. किसी का कोई क्वेश्चन? सॉरी, Maybe your passion? नो इज, हाँ पैशन है, एब्सोल्युटली राइट. बट वो पैशन कैसे आया, आई यूज टू गिव द काउंसलिंग्स, ठीक है. मेरी काउंसलिंग्स बहुत डिफरेंट वे में होती है. अभी मैं बहुत नटशल में आपसे बात कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक सो कि इस प्लेटफॉर्म पर आप बहुत ओपनली अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं कर सकते.
और जब हम वन ऑन वन बैठते हैं कॉन्फिडेंशियल रूम में, तो वहाँ पर हमारी बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको एकेडमिक के लिए वो आते हैं, वो 3 आवर्स अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं, क्योंकि जब तक वो पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, माइंडसेट नहीं समझ में आएगा, उनका डिस्टर्बेंस लेवल क्या है, वो कितने नेगेटिव हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनका मास्टर कहाँ जाएगा, वो हायर एजुकेशन के लिए है भी या नहीं है, फैमिली कैसी है, फैमिली की क्या सोच चल रही है, पेरेंट कुछ और सोच रहे हैं, दादू कुछ और सोच रहे हैं, मदर कुछ और सोच रही है, मतलब एवरी टाइम वी हैव डिफरेंट केस, और इतने चैलेंजिंग केसेस हैं, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 100% सक्सेस रेशियो है, और उसका जो सक्सेस रेशियो जो है, उसका जो कहते हैं ना कि सर ताज, जो ताज जाता है वो उन्हीं पे जाता है, क्योंकि वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। अगर वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपसे मैंने पहले क्वेश्चन एक पुटअप किया था कि फोर्सफुली तो नहीं हो, अगर आप फोर्सफुली खुशी के वजह से हो, तो वो मेरा भी एक जो कनेक्शन है आपके साथ, पहले तो आपका मेरे साथ नहीं बन पाएगा, राइट? आपके अंदर के डाउट्स, क्वेरीज, क्यूरियोसिटी नहीं होगी इंट्रैक्शन करने की, तो वो मेरा ये सेशन जीरो होगा। तो मैं चाहती हूँ चाहे कम हो, लिमिटेड हो, चाहे मेरे साथ 2 ही कैंडिडेट्स क्यों ना हो, बट वो डैम इंटरेस्टेड हो कि हाँ, हमें हमारी क्वेरीज हैं उसको सॉर्ट आउट करना है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। एंड ये जर्नी सिर्फ इसी लेवल पे नहीं है कि आज छोटा सा हो गया, मैंने बहुत सारे हिंट दिए हैं कि फ्यूचर आप कहाँ तक जा सकते हो, लेकिन वो फ्यूचर आइडियाज, आपके जो ड्रीम्स हैं, जो थॉट्स हैं, जब तक आप वो शेयर नहीं करोगे, मैं आपको एंटरप्रेन्योर की तरफ भी नहीं लेके जा सकती। क्या आप में क्वालिटीज एंटरप्रेन्योर बनने की है, क्या आप में क्वालिटीज किसी के अंडर जॉब करने की है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको समझना पड़ता है अकॉर्डिंगली, कि हाँ, आप शायद जो कोर्स बोल रहे हो, अभी तो मैंने रैंडम बोला कि ये कर लो, ये कर लो, एंड समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोलूँ ये कोर्स आपको नहीं करना है, आपको शायद एक डिफरेंट पाथ में जाना है। तो एक्चुअल में करियर काउंसलिंग्स वही होती है कि स्टूडेंट आता एक्स के लिए, उसको शायद उसके लिए वाई या जी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, दैट कवर्स अ करियर काउंसलिंग्स, कि उनकी सोच किस तरफ, किस डायरेक्शन में जा रही है, उनको मार्केट का पता नहीं, इंडस्ट्रीज किस वे में जा रही है, अपकमिंग इंडस्ट्री जो 5 साल के बाद इंडस्ट्री होने वाली है, आने वाली है, वो इंडस्ट्री को हम प्रिडिक्ट करते हैं। एंड एक चीज़ और, सिक्स सेंस कहीं ना कहीं मेरी काम करती है। हिंदी लैंग्वेज पे बात करी थी, आउट ऑफ द वे जाके कुछ बात कर रही हूँ, हिंदी लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ गई, मैंने वीडियो बनाया, बट अभी सेशन से बैक टू बैक तो मैं नहीं अपलोड कर पाई। देन जो मैथमेटिक्स एंड द करिकुलम में जो चेंजेस है, अर्लियर इट वाज द मैथमेटिक्स, नाउ साइंसेस, सोशल साइंस, इन सब करिकुलम में डिफ्रेंसिएशन आ गया, चेंजेस आ गए, 2 लेवल्स बन गए। अगेन द प्रॉब्लम, अगर डेटा साइंस और एआई है, एंड रिसेंटली टुडे इटसेल्फ इन द मॉर्निंग आई चेक द न्यूज़ हेडलाइंस, ई न्यूज़ हेडलाइंस, और उसमें यही था, मीन्स मेरी वीडियो बनाने से पहले वो आ चुका है, बिकॉज मैं थोड़ा सा डिले थी, राइट? बट ये सोच मैं ऑलरेडी 2 साल पहले की है, और लास्ट 1 ईयर में तो ये सोच बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर चुकी थी। बट उन चीज़ों को एनालिसिस इसलिए इसलिए आप कर सकते हो, रीजन बीइंग कि यू आर प्रीटी अवेयर अबाउट दैट मार्केट, राइट? मैं उस इंडस्ट्री, नॉट ओनली द एजुकेशन, ईदर द मेडिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, और यू कैन से द अदर आईटी इंडस्ट्री, देन फैशन इंडस्ट्री, मतलब वट एवर द इंडस्ट्री वुड यू लाइक टू आस्क फ्रॉम माई साइड, आई विल गिव यू ऑल द एग्जाम्पल्स कि हाँ, ये इंडस्ट्री बूम करेगी या नहीं करेगी। सो इन दैट वे career counseling actually happened, right? So next continue करें आफ्टर जतिन। जतिन, am I clear? अंडरस्टैंडिंग हुई क्या करना है? यस मैम, हम्म? यस मैम, कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके, सो नेक्स्ट इज खुशी खत्री। यस खुशी, Ask you a question. यस। Ma'am, are there culture exchange programs in the universities? यस, So, ma'am, how can we participate in that? कल्चरल प्रोग्राम्स और द कल्चर प्रोग्राम्स। Cultural exchange programs. Okay, okay. So what is in your college? What kind of facilities are given by the college? Is there any facility or not? I don't think so, no. No. Okay. Are you in any student union group or the student union with the Delhi University students? No.
just explore good relationship with the students who are actually pursuing any degree program from the any college of Delhi University, because under Delhi University they have different platform that doesn't come under the IP University, because IP University many you can say the colleges are private, which they have their Yes, own ma'am. decision. The management is having own decision. They are not focusing on the overall, or you can say the holistic development of a child, right? They are focusing just on their admission part and the placement part, nothing beyond that. Before placement I can add internship part. But Yes, ma'am. if we are interested for the cultural cross cultural activities, then one, you can join the external groups, right? And the Delhi University groups as well. There you will get good exposure. If you have any connection, if someone is having any connection with any of the Delhi University good colleges like the Hansraj, SRCC, and you can say Motilal, few colleges, I'll share a list with Khushi and she will share it with you. They have the societies actually, and those societies, they are actually participating in the cultural activities as well as the you can say the role play activities, and sometimes nukkad activities, right? So everything is included. So just try to expand your network through the LinkedIn. You can just have a chit chat with them, connect with them, exchange your number, and then participate. And Okay, out of ma'am. that, few private organizations, they are also running. So you need to just check nearby your surrounding, is there anyone where you can enter and make the connections. Okay. Fine. Thank you. Is it clear to you? Thank you. So is Nambya? After Khushi, it's Suhani Sethi. Good Suhani? afternoon, ma'am. Yeah, hi, good afternoon. How are you? I'm fine, ma'am. How are you? Good, dear. Suhani, let me find out. Okay, you are a candidate of BCom from same college? Trinity, yes, ma'am. Fine. How to pursue international relations after BCom and what is the scope of the same? Lawyer or international relations? Okay. First, your question is how to pursue international relations. Why you are interested for the international relations? Ma'am, during my 2 years of graduation, what I'm pursuing, I realized that okay, this is not really my interest, and this is not something I would like to do in the near future. I don't want to sit in a cubicle and do some corporate work. I'd like to experience that also, but I think it's just not me. So I had three options, and uh, I had planned in my mind that I will ask you about it. The three options that I have was pursuing law as higher studies, Mm-hmm. doing something in psychology Mm-hmm. in the near future, and pursuing international relations. Okay. For me, choosing international relations was I did take an aptitude test 2-3 years back, and Mm-hmm. the counselor there also they told me that she has a diplomatic mind and she has a diplomatic thinking. So something related to that, the career would be more appropriate for her rather than pursuing something and doing something in the corporate world. So I did research about some career paths that were diplomatic in nature, and I had these three in mind, and it was quite interesting. So I decided these three. Okay. Because of one concept of diplomatic mind, right? You are thinking about law, psychology, and international relations, and you are more inclined towards the international relations, right? I'm more First inclined priority, towards psychology and law. to whom I should give first preference? Law, psychology, or international relations? Just prioritize it. Psychology. Psychology, Psychology is his law, first one, yes, law ma'am. second, And then and third? international relations. Okay, fine. So let's have a discussion on the psychology part. How good you are at understanding people's mind, behavior. Are you observing the behavior pattern? Quite a lot. I can say that. I can actually make out with the behavior and the face of a person what they're feeling. Probably if one of my friends comes up and they say, Ki, hi, how are you? I can make out what is going on with them with just a hi, how are you? So I think I can be a person like Okay. that. And would you like
to, or say love to, guide someone? For sure. In which part would you like to guide? Is it the education part or the relationship part? What else? I think I'm more into the relationship and the therapy part. I can say that people are, some of them are must be going through some of the childhood trauma they have, some relationship problems, some friendship problems, family problems. So I have seen that I quite motivate them a lot in these matters. Okay, fine. Now, tell me a candidate who had completed BSc in psychology or BA in psychology. In this case, it is applied psychology. There are two different concepts. One is the clinical psychology and second is the applied psychology, right? Clinical psychology is basically for the science students, and for the general students, humanities or the commerce, they can shift towards the applied psychology, right? Now, coming to the part, a student who had completed bachelor in applied psychology or the simple psychology honors, and they have done masters as well, fine, and after masters they are either into the education counseling or into the relationship counselings, right? Then why any candidate, any in the open market, any person can approach you, or they will be interested to approach you to get the guidance on the relationship counseling, on their behavior pattern and something else? On what ground, on what basis? Just because we know we are diplomatic, we know we can observe a candidate, a person, and I guess so Gen Z and the millennials, they do have that observation, and with the gradually with the experience, they have the experience, they will come to know, okay, what is in the mind of a candidate or a person or a client, right? Yes, ma'am. Now, I would like to add one thing. We can guide only if you will feel the pinch, right? अगर मैंने किसी को एडवाइस करना है, इट मीन्स कि अगर मैं उस पोजीशन पे होती, चाहे मैं छोटी हूँ, चाहे मैं बड़ी हूँ, चाहे मैं मेल हूँ, चाहे मैं फीमेल हूँ, चाहे मेरे रिलेशंस जो है वो हस्बैंड के साथ है, चाहे वो मेरे बच्चों के साथ है या बच्चों के आपस में है, सिबलिंग्स के है, तो मैं उस ग्राउंड तक क्या आ सकती हूँ? क्या मेरे में ऐसे इमोशनल फीलिंग्स है? इफ यू हैव दैट इमोशनल, नो डाउट आपको प्रैक्टिकल तो रहना है, प्रैक्टिकल रहकर भी आपको इमोशनल भी होना पड़ेगा. इन दैट वे यू कैन गाइड 100%, राइट? बीकॉम के बाद आप साइकोलॉजी परस्यू कर सकते हो, लेकिन मैं आपको साइकोलॉजी की तरफ सजेस्ट नहीं करूंगी. रीजन भी, एक तो इंडिया में बहुत अभी भी आने वाले 10 साल तक साइकोलॉजी के ऊपर, और वो भी अप्लाइड साइकोलॉजी के ऊपर, बहुत टफ रहेगा. यू विल नॉट गेट सक्सेस. आप जर्नल साइकोलॉजी एडिशनली आपने मास्टर्स किया, वो आपको हेल्प मिलेगा एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द करियर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट विल नॉट हेल्प यू, राइट? बिकॉज इस केस में जो MBBS करके लाइक MD साइकेट्रिक नहीं बन पा रहे, दे हैव ऑप्टेड BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, राइट? और उसमें RCI का, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर RCI जो है, दैट इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वहां से सर्टिफिकेशंस लेना जरूरी होता है. तो जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं तो तभी ही हम इन चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब, ID, LD मतलब मींस इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हैं. मैं ब्लाइंड, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड विजुअल इम्पेयरमेंट पे नहीं जा रही, बिकॉज दोज आर द स्पेशल केसेस, वो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे. और जर्नल रिलेशनशिप, आप जर्नल भी किसी को गाइड कर सकते हो अगर आप इतने मेच्योर हो, आप अपना एक सेटअप भी कर सकते हो हैविंग द डिग्रीज. तो ये एडिशनल बेनिफिट सिंपली आपके लिए मिलेगा, बट एक करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, कहीं जॉब के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा, बिकॉज इतनी यूनिवर्सिटी, उनके n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने साइकोलॉजी किया, दे आर फ्री, दे डोंट हैव जॉब्स. देयर इज नो माइंडसेट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया कि वो ज्वाइन करे साइकोलॉजी. सपोज मैं हमेशा अपनी एग्जांपल्स देती हूँ ज्यादा. उमंग, 1 सेकेंड. व्हाट हैपन कि अगर मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो व्हाट एवर माई चार्जेस, तो उनके अगर कॉल्स आते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है, मतलब उनके क्वेश्चंस ये होते हैं कि आपकी काउंसलिंग में ऐसा क्या स्पेशल है
इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ आई एम गिविंग माई टाइम, माई एनर्जी, एनालिसिस मैं कर रही हूँ, या मेरे को कुछ का रिसर्च वर्क करके भी देना है, तो दैट इज टाइम टेकिंग. तो वो जब आपको बहुत सारा रिसर्च वर्क करना है, तो आपका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग होना चाहिए, आप तभी तो किसी को हेल्प कर पाओगे, राइट? तो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन या डिप्लोमेटिक वे साइकोलॉजी की फील्ड में हेल्पफुल उतना नहीं है, ठीक है? तो मैं इसको बोलूंगी कि आप प्लीज फर्स्ट प्रेफरेंस मत दीजिए. सेकेंड, इफ आई टॉक अबाउट लॉ, यस, लॉ आपका प्रेफरेंस सही हो सकता है, और इसमें ऐसा नहीं कि आपको कॉर्पोरेट में ही बैठना है, बिकॉज उसमें भी स्पेशलाइजेशन डिफरेंट है. बीकॉम किया है, बीकॉम के साथ अगर आप लॉ की तरफ जाते हो, आप कॉर्पोरेट लॉ में भी जा सकते हो, और वही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज वो कंपनी, आपका जो कॉमर्स है वो कंपनी प्रोफाइल के अंडर है. आपको अगर कॉर्पोरेट लॉ के में नहीं जाना है, तो हम लीगल स्टडीज में भी जा सकते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, राइट? इफ यू आर गुड इन राइटिंग, आपका जो टेक्निकल स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, एनालिसिस करना है, जो रिपोर्ट्स को ड्राफ्टिंग करना है, वो बहुत स्ट्रांग है, तो आप लीगल स्टडीज की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए पहले आप अपने आप को थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि मेरे में सबसे बेस्ट पॉइंट्स क्या है, क्वालिटीज, गुड पॉइंट्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है. स्ट्रेंथ्स को देखो, वीकनेसेस देखो, बहुत कॉमन है, मैनेजमेंट का पार्ट है स्वॉट एनालिसिस. मैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करूंगी, मैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की बात नहीं कर रही, सिर्फ स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस. उसके बेसिस पे फिर हम लॉ की तरफ जा सकते हैं, और उसमें लॉ में ऐसा नहीं है कि मुझे सिविल लॉ करना है या क्रिमिनल लॉ करना है. इफ यू आर गुड इन डीलिंग, मीन्स आप अपने पॉइंट्स रख सकते हो, आप दूसरों को परसुएट कर सकते हो कि नहीं, ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, तो हम सिविल लॉ की तरफ भी मूव कर सकते हैं. क्योंकि कॉमर्स है, तो कॉर्पोरेट लॉ की तरफ जाते हैं तो काफी अच्छा स्कोप रहता है, राइट? और आप अपना इंडिपेंडेंट जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स, लाइक द LLM, जो स्पेशलाइज्ड एरिया है. तो ये एक पार्ट हो सकता है, बट उसके लिए आप और डिटेल में एक बार डिस्कस करना, देन आई सजेस्ट. थर्ड आपका पार्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशंस. अगेन इसमें मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, अगर आपको कॉमर्स में अकाउंट्स कितना स्ट्रांग है, मैथ्स कितना स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कितना स्ट्रांग है, I can say above average. अबव एवरेज. आप इसमें से किसको प्रायोरिटी दोगे? इनकम टैक्स, कंपनी लॉ, अकाउंटिंग, फाइनेंस पार्ट, विच वन इज द बेस्ट, द नंबर वन? Company law. Company law. Okay, that's great. If you know the sections under the company laws, ratification है या अंडरस्टैंडिंग है? दोनों है कहीं ना कहीं. कंपनी लॉज है, तो आई थिंक लॉ की तरफ मूव करो, और फिर लॉ की तरफ मूव करते हुए आप एडिशनली मास्टर्स जो है, एक तो LLM तक कंप्लीट करो, और उसके बाद आप इंटरनेशनल लॉ की तरफ और ड्यूअल डिग्री भी ले सकते हो. वंस यू विल कंप्लीट विद योर LLB. अगर LLB करोगे तो LLM नहीं कर सकते. LLB इज अ रेगुलर प्रोग्राम, और इंटरनेशनल रिलेशंस भी रेगुलर में प्लान करोगे तो, और अच्छी यूनिवर्सिटी से प्लान करोगे तो बेनिफिट है. तो 2 रेगुलर डिग्री वहां से ऑप्ट करना, जहां पर अगर लगे कि ये कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज आपको अलाउ कर सकती है, तो 1 LLB परस्यू कर सकते हो, सेकेंड आप MA इन पब्लिक रिलेशंस, सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस आप परस्यू कर सकते हो. इन दैट वे व्हाट विल हैपन कि आपके पास मास्टर्स और बैचलर डिग्री कंप्लीट है, बैचलर और मास्टर, एंड आप सेकेंड बैचलर लाइक LLB जो 3 इयर्स है, तो आपके पास में 2 चीजें तो हो चुकी हैं. तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपको हेल्प करेंगे, बट उसको अब अगर आप लॉ के साथ कंबाइन करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो आपको दोनों तरफ से बेनिफिट मिलेगा. बट आपके पास टाइम कितना है स्टडीज के लिए, मैरिजेस के प्लान्स क्या है, पेरेंट्स कितना लॉ करेंगे, वो सब फैक्टर्स I think कंसीडर करना. my parents, they never say no ki if you want to study, you study till 27 28, we have no problem. That's great. Then you can pursue both degrees regular. One is the LLB, right? And the another is the international law. International law would be your master's. Within 2 years, you will complete with your bachelor and master's, and the next 3rd year complete with your LLB, and next 2 years more with your LLM. So you will be having 2 master's degree, even 2 bachelor degrees. तो आप मूव कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में मूव कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात आती है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा है. नीति आयोग में बेनिफिट लो, इंटर्नशिप्स करो. नीति आयोग में जो बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स होते हैं
वो इंटर्नशिप्स करते हैं, वहां अप्लाई करते रहो, ठीक है। और ऐसी कंपनीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्क है, डीलिंग है, एमएनसीज है, दे डू हैव देयर इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। उनको मेंटेन करना, उनको बैलेंस करना, तो वो एक तरह का पार्ट पीआर का भी आता है जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं कि हम विद इन इंडिया नहीं, हम इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और उस केस में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, इट डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज, एडिशनल लैंग्वेज आप क्या ऑप्ट कर रहे हो, राइट, लाइक फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एटसेट्रा। वो एडिशनल लैंग्वेज आपको और स्ट्रॉन्ग करेगी इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसलेटर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है। अब आपको चॉइस करना होगा कि क्या मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ मूव करना है, थोड़ा सा हार्ड लेवल रहेगा आपका, और एलएलबी की तरफ मूव करते हो तो फीस मींस उससे बेटर, थोड़ा सा कम जो है लेवल, जो हार्ड लेवल है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? आई एम डन Yes, विद ma'am. दिस Yes. थिंग। डाउट्स क्लियर? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you. Yeah. Next, Tuhina Singh. Tuhina, you are also from TIPS, BJMC candidate. Hi, Tuhina. Are you there? Yes, Tuhina? ma'am. Good afternoon. Yes. Good afternoon. Camera on करेंगे please. Ma'am, I'm so sorry. I can't switch on my camera. I'm actually in my office right now. So you are in Yeah. office. Is it Yeah. under internship or it's a No, final no, joining? ma'am. No, ma'am. I work with my mother. Okay, okay, fine. So you don't have any question and you didn't mention your dream career. You're working with your mom, right? Yes, ma'am. My mom has a clothing line, so I like to help out her. So fully interested? Ma'am, I'm not fully interested, but yeah, I like to help her out sometimes, and yeah, that's that. Dream career, I didn't write because I'm figuring out what I want to do. I'm interested in makeup, I'm interested in social media marketing, and I'm also interested in a clothing line. I want to start my business of my own. So like, there's a lot of things that I want to do, but I can't really figure it out exactly what I want to do. Okay. So what kind of business? What is in your mind? Ma'am, I'm thinking more of a clothing line only of my own, Mhm. but not of a designer clothing line, more of a manufacturing clothing line. Okay. But that's not sure. Mm-hmm. So yeah. Okay. So coming to this part, manufacturing, I would like to ask, if you don't mind, Yeah. do you have sufficient funds for this manufacturing industry to enter into this manufacturing Yeah, ma'am. industry? Yeah, my mom is into it, so that will be a great help. Fine. So, what kind of manufacturing like your mom is doing? Ma'am, she's doing I don't know really, but it's like a mass production. Yeah, I got it. See, under mass production, it is simple weaving Yeah. of the clothes. Whether those weaving under the, you can say, the fabric which will turn in suits or in some dresses or in saris. So what Ma'am, it's a exactly? Western wear brand. Western wear. Okay. Yeah. So under Western wear, again, there is one question. Is it t-shirts, tops, shirts, jeans, what? Ma'am, it's everything. It's everything in Western wear. Okay, but see, Like if I'll talk about the whatever you can manufacturing imagine, part, Western wear is done. sorry. Okay, see, if I'll talk about the manufacturing part, so manufacturing, it's a huge investment, first thing, and the industries that is actually either in Ludhiana, Punjab, and the another industries would be, you can say, south side, right, and in the villages. So if this manufacturing plant would you like to start, then one manufacturing plant itself is in We CRs. actually have a manufacturing unit in China. It's not in India here. Okay, fine. And that manufacturing unit, if I'll talk about jeans, as you said that variety of the things under the manufacturing, it means jeans fabric is different, t-shirts fabric different, suit fabric is different, top fabrics different, right? So if multiple, then I guess so you should join your mother's business and expand, do the export and import. Mom, I thought about that, but I don't want to, do something with my mother. I want to do something of my own. And
this clothing line is just an idea that I had in mind, that I want to do something in business. But there's also other things that I really keen on doing, and for example, social media marketing. Right now, as I'm doing bachelor's, I'm confused about what exactly do I have to do in masters, because there's a lot of specification in masters as well, right? That you either do digital marketing, or there's a lot of specification, right? So I'm basically right now, as of now, I'm confused as to what specification is suitable for me, that will help me out later in life. Fine. Tuhina, you told only one part, digital marketing, master in digital marketing. I'll say no. It's a simple Okay. 6 months program which you will get exposure from any of the external institutes. If I'll talk about the universities and the curriculum, they have made the curriculum in such a way that they want to, create confusion. I'll give you examples. BB in data science, BB in data analytics, BB in digital marketing, Yeah. BTech in AI and ML, right? Even BCA in AI and ML. So actually, if I'll talk about the curriculum, that is not the appropriate curriculum. Masters in digital marketing is not the appropriate one. Yes, you can go with the masters in the marketing, MIM, master in marketing management, one part, or masters in export and import, or masters in international business. If you want to expand your business, right, first gain the experience, get the exposure from your mom's side, what she's doing, how the things are coming, how she's handling the clients, how the products are being initiated, what is the level of the positioning of the products. So n number of factors you will have to figure it out, right? And then not only the clothing, you can set up the plant, a manufacturing plant, into different segment, different part, different sector. But these would be the key areas where you will get knowledge and the experience, exposure, everything. In that way, whatever the product in near future you would like to add from the China or any other country, you can, and you can do the export import business. Understand the concept of export import, the policies, what the challenges you can face, or what precautions you will have to be taken, you will have to consider, right, to do the business. So all these nitty-gritty within this 1 year you can check. And a complete digital marketing program you can opt, that is of 6 months or max to max 8-month duration. What you can do, you will have to do the projects under the digital marketing related to your own product, if you will choose your product, or your mom's business, then that will boost your mom's business, right? And in near future you will be able to understand how to position my products. And digital marketing is the smallest part of the complete marketing part. So understand the concept of the traditional marketing first. Digital marketing is only understanding of 6 to 8 months, right? So I told you few topics, few master degree programs, but in detail if you want, then you can connect with me, because right now what I can observe, like only the one master degree you told me, but not n. If you will mention all these things, as the previous person, she mentioned law, psychology, international relations. So I discussed on all the parameters, what would be best for them and how and why, right? Accordingly, I gave my 3 opinions to you. I think your little bit doubts are cleared. Yes, ma'am. Sure. I've noted it all down. I'll contact you through Khushi if that's not an issue. Sure. Anytime. I'm sorry to interrupt, ma'am, but I have someone who can Tuhina talk to. Sorry? My sister Umang. I'm sorry to interrupt. I have someone who can Tuhina can Next contact. is Umang Khatri only. Yeah, she is already working into fashion and textile industry and import and export. So Wow, both of that's them can, great. contact and have some talks I'm if we are interested. basically, I sure. would like to say hi to everyone. I am Hi. Umang Khatri, and I have lived in this session my past 10 years again. So I have studied psychology. I wanted to do law. My second priority was BGMC, and I am into export import field.
So this Good. was the main. When Kushi told me about this, no, so I was really not into. Matlab, I was not having an idea ki I will be able to do it or not. But when I got to know that everything will be discussed, so it's basically a different type of, I can say, uh, what I can say is like I have relived the moments. I definitely wanted to join and understand what are going nowadays, how things are going on. Mhm. So that's the reason when you are talking about psychology, na, I wanted to say that I have studied it in my higher education, Mhm. and I got to know that it will not in India. It is not that right now. It's not a good thing to do because my teacher also said it to me that it's not an easy field in India as of now. So she told me that you should not, think about this because you need lots of patience. There are many other things that you need in yourself. For that, you need to learn more about yourself Correct. to, come to this field. So, law again, I have a joint family. All the ladies were, I being the first child, they were like, you Mm. should not do law. It is not safe for girls and everything. My second Ma'am, preference she's is the eldest in our family. She's the eldest daughter in our family. Great. so I'll second, note down your points second, and then I yeah, will yeah. clear your doubts too. Yes. Fine. Continue. Yeah, that's why I have done. I wanted to do BGMC also, but somewhere down the line, I was not able to do it as well. So then at last I came to import export because this thing somewhere runs in our family. Many family members are into this field in different positions. Someone are in quality section, some in productions, some as merchandiser, some as just the agents between the factories. And like I said, I myself as working as a merchandiser in a buying agency. Okay. So we are exporting goods from India to Mhm. US, UK, Spain, Australia, all over the world. Okay. And we do have our offices in different part of the country. So we are importing also and we are exporting also. Great. Yeah. Good to know. But I would like to know what is your qualification? Your bachelor degree and master degree. So I did my qualification in diploma in elementary education because ELH. everyone in my family wanted me to do teaching Mm-hmm. job. Okay. So like I said, being the eldest one, I had so many pressure, so I was like I should not hurt anyone's sentiments or feelings, so I did that. Mm. And after that I completed my uh, Mhm. Yes, yes. Actually, yeah, I, power I I battery of. completed my degree in political science honors, Okay. but I did it via distance because after second year I started working because somewhere down the line I did not wanted to sit at home doing nothing. I started working as in a buying agency only. Mhm. So by working there, like you said, told I guess Hansika or someone that you should focus on your studies only, then you should start a job. That's an incident happened with me because I started doing job, everything just jumbled up, Yes. and I didn't. After that, I was not able to understand what should I do or not. So I continued in this field only because slowly I getting more knowledge, everything, and it got me excited also. This field is too much. Will also say too much because there are different options, Correct. different ways, different things you can do in this field also. Mm. So now enjoying also, you can say. Yeah, it's hectic but it's fruitful too, Yes. I will say. Fruitful because you are actually earning. And once you are receiving, it means that is pretty good. It's a win-win situation. That is why I'm saying Mm. na, So, you should complete your education first. yes. And within the discussions, you raised two times, I guess, two times your hands. So, is was that the same thing you were talking? You would like to talk Yeah, about? like I said, Mm-hmm. once you were telling about the psychology part, Mm-hmm. so I have done that. Like at that point, I also only I was going to tell that you need to have a lot of patience and understanding to Exactly. go through psychology and the later phases. And what are the scenarios now is everybody is not that patient. Correct. Because myself, I used to think that I am very patient,
but slowly that patient somewhere, running off. So you need to have that feeling, that of understanding everyone else's feelings, and not just thinking about it in a certain way. Because regularly, which in these days, what are we going through is like, we are understanding everyone's feeling, but moreoverly we are putting ourselves, our feelings into that, and Exactly. that is why we are making mistakes. Correct. Well So said. these fields are very, like, patience, time, understandings before opting to psychology or the field. Correct. As I told, Yeah. I mentioned, like it took at least 2 hours or 3 hours in a day to understand or listen someone. I share one real incident. What happened, one person, I guess he was too much depressed, and he is having anxiety issues. Medically, he is taking even medicines as well from renowned doctor. He is from UP. He was just searching for a psychological counselor, and somehow he approached me, and then he talked to his own doctor कि ऐसे ऐसे एक काउंसलर है. तो काउंसलर डॉक्टर ने बोला कि एक करियर काउंसलर जो है वो आपको साइकोलॉजिकल काउंसलर या फिर आपका डिप्रेशन या एंजाइटी पे काम नहीं कर सकती है. सो ही वॉज अबाउट टू कैंसल द सेशन. तो फिर टीम ने बोला कि आप एक बार आओ, हियर द सेशंस आर टोटली डिफरेंट. अब उनका जो सेशन था उससे मेरे सेशन से पहले ही अप्रोच्ड वन मोर डॉक्टर, एंड उस डॉक्टर के अंदर इतनी पेशेंस नहीं थी उनको सुनने की, समझने की, और मतलब उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से, बहुत बैडली यू कैन से, मतलब वर्स्ट सिचुएशन होती है ना, वो क्रिएट कर दी ओवर द कॉल. तो जब वो यहाँ पर आए, अब बहुत लेट टाइम था, लेट नाइट था, लेकिन उसकी जो मेमोरी थी वो इतनी शार्प थी, इतनी शार्प मेमोरी. उसको सन याद है, उसको हर एक चीज का हर एक डेट याद है, उसको सिचुएशंस याद है, उसको सर्कमस्टांसेस घर में क्या है, सब कुछ उसको पता है. ही नोज कि उसको एंजाइटी है, वो क्यों है, या बिकॉज उसके 2-3 रीजन से. एक, सोसाइटी में नो वन, उसका कोई फ्रेंड नहीं है. जिस लोकेलिटी में रहता है वहां पे कहीं पे भी प्रोग्रेस के पॉसिबिलिटीज नहीं है. मीन्स हम बहुत सारे फैक्टर्स, मैंने आपको 2 ही अभी फैक्टर मैं शेयर करूंगी. उन सब चीजों पे अगर और पेशेंटली कोई उसको सुनेगा नहीं. एंड ही प्रोमिस्ड मी कि मैम जो 6 मंथ्स तक का उन्होंने मुझे मेडिसिन के लिए बोला है, डोज रिड्यूस की है, बट वो 6 मंथ्स है. आई ट्राई कि मैं उसको 2 मंथ्स के अंदर अंदर कवर करूं, और मुझे मेडिसिन नहीं लेनी है. ही टुक 2 सेशंस ऑफ माइन, और उस 2 सेशन में इट इज नॉट ओनली द अकेडमिक, जो अप टू वन एक्सटेंट हम एंजाइटी इश्यूज पर काम कर सकते हैं. एंजाइटी किसी चीज के लिए नहीं है, कुछ एंजाइटी कुछ नहीं होता है. एक जो चीज आप पाना चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, वो एंजाइटी हो जाता है, वो ही एंजाइटी By इशू है. ourselves we create these situations. Anxiety is within from ourselves. यस, Nobody creates things for करेक्ट. ourselves. We from ourselves, within from ourselves, by thinking too much. वो क्या सोचेगा, वो क्या करेक्ट. बोलेगी. करेक्ट. All these situations create all these things. वो भी सोचेगा भी, और एक ये कि वो कुछ अचीव नहीं कर पाए, कुछ अचीव नहीं कर पाए. अगर किसी प्रोग्राम में बीसीए में एडमिशन लिया, अब बीसीए में लिया तो उसको लैंग्वेजेस नहीं पता है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो वो सोच रहे हैं. तो पार्ट ये है कि इट इज नॉट द अकेडमिक करियर काउंसलिंग. जब हम साइकोलॉजी के पार्ट में आते हैं, साइकोलॉजी के फील्ड में आते हैं, तो साइकोलॉजी के फील्ड में आपको पहले उसको पर्सन को सुनना और समझना पड़ेगा. वो जिस भाव से, जिस फील से वो आपके साथ शेयर करता है अपनी चीजें, जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा, आप उसको टाइम नहीं दोगे, आप उसको एग्जैक्ट करेक्ट एडवाइस नहीं कर सकते. और ये इतनी पेशेंस किसी में नहीं है कि वो 4 to 5 आवर्स किसी को सुनता ही चला जाए. लास्ट सेशन में एक कैंडिडेट जिसने एमईटी से साइकोलॉजी किया है, 2 इयर्स 11th and 12th साइकोलॉजी, बैचलर साइकोलॉजी, मास्टर साइकोलॉजी, मीन 7 इयर्स साइकोलॉजी की कैंडिडेट है. और वो साइकोलॉजी की कैंडिडेट मेरे से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए आई थी कि व्हाट टू डू. शी वाज कंफ्यूज्ड. सी, क्योंकि जो करिकुलम है ना और जो एक्सपीरियंस है, अब मैं अगर आपकी बात करूं उमंग, वॉट एवर यू डिड, डीएलएड in the teaching line, political science, simple, but you actually entered in the business, in your family business, right? तो वो जो experience, जो exposure होगा,
वो हम जितना मर्जी ये सब बच्चे एजुकेशन मास्टर्स भी ले लें, जब तक वो रियल वर्ल्ड में एंटर नहीं करेंगे इनके हाथ में कुछ नहीं है, राइट। और आज के टाइम पीरियड पे जो जेन जी को सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा हाइप कर दिया, वो बच्चा मर गया, खत्म। बिकॉज एक्चुअली उसके पास पोटेंशियल है, आइडियाज है, बट जेन जी का नेचर, बिहेवियर पैटर्न इतना ज्यादा डिफेम हो चुका है कि नो वन इज रेडी टू इवन गिव द जॉब्स टू जेन जी, बिकॉज वो उनकी सोच डिफरेंट है। तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई है, ये सोसाइटी, ये मीडिया ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, राइट। हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, हमारी एजुकेशन क्या कहती है, हमारा नेचर क्या कहता है, इन सारी चीजों को जब हम मीन्स ऑल ओवर द थिंग्स, हम सराउंडिंग्स में सब कुछ जब स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे लिए लॉ फील्ड भी बेस्ट है, तो हमारे लिए साइकोलॉजी फील्ड भी बेस्ट है, हमारे लिए पॉलिटिकल साइंस फील्ड भी बेस्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी बेस्ट है, फैशन इंडस्ट्री भी बेस्ट है, राइट। वो आपका इंटरनल इनहेरेंट, क्या आपके पास आपकी क्वालिटीज क्या है, या आपको जैसे आपके सर्कमस्टांसेस क्या थे, आप एजुकेशन में नहीं इतना मूव कर पाए, लेकिन as per me you are the successful person, because at the end why we are studying, at the end we need financials, we will We have have to, to earn money. We have yes, to be financially dependent on yes, ourselves. Yeah. financially strong, secure, because हमें अपनी लाइफ और अपने हमारे साथ जो भी है चल रहे हैं उनकी लाइफ को भी मैनेज करना है, अपने घर को भी मैनेज करना है। तो अल्टीमेटली हम ये जो एजुकेशन ले रहे हैं या स्किल्स ले रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू अर्निंग, वो चाहे हम जॉब करके करें, चाहे हम अपना बिजनेस करके करें। अब आपका अगर आज भी इंटरेस्ट लॉ में है, तो आप पैरेलली अपना लॉ परस्यू कर सकते हो, और वो क्योंकि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, राइट। तो डिग्री एड ऑन करनी है, अगर इफ यू लव टू लर्न, लव टू रीड, लव टू स्टडी, तो ये आपके लिए एक एड ऑन डिग्री होगी। माइट बी ये डिग्रीज आपको हेल्प करेंगी, सो कॉल्ड, अगर किसी थर्ड पर्सन का माइंडसेट है, इन टर्म्स ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैरिज पर्सपेक्टिव, एक एजुकेशन वन, बट वो भी ज्यादातर इंक्लाइंड होंगे या इंटरेस्टेड होंगे बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट वन, यू आर अर्निंग, और आपका जो अप्रोच है, जो आपका सोच है, वो बहुत डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू अदर पीपल। तो वो एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा होगा रादर देन द स्टडीज एजुकेशन। बट स्टिल अगर हमें अपनी एजुकेशन ऐड करना है, तो आप जस्ट फॉर द लविंग से आप अपनी एजुकेशन लॉ कर सकते हो। साइकोलॉजी के टूवर्ड्स भी हम जब हम एचआर की हायरिंग, क्योंकि अगर हम एचआर की बात करें, जो एमबी इन एचआर या मास्टर्स इन एचआर करते हैं, उनके लिए भी साइकोलॉजी, लाइक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंडस्ट्रीज में जो टीम मेंबर्स को हमें हैंडल करना है, आज के टाइम पीरियड पे अगर आपको ये पता हो कि एम्पैथेटिक कोई नहीं है, राइट, तो एम्पैथी हमें अपनी टीम मेंबर्स के साथ कैसे कनेक्ट करनी है, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है कि हमारा बिजनेस भी हैम्पर नहीं करे और वो टीम भी हैंडल करे, तो वहां पर भी साइकोलॉजी वर्क करती है। तो इन केस अगर आपको ये लगता है कि मैं टेक्निकली स्ट्रांग हूँ इन टर्म्स, देन गो विद लॉ। अगर आपको लगता है कि मैं और अपनी साइकोलॉजी के पार्ट को भी अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, बट साइकोलॉजी, यस, अभी आई गेस इधर द बैचलर मास्टर्स ऑनलाइन अभी कुछ यूनिवर्सिटीज ने, एक दो यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, प्रोफेशनल है, इसलिए ये जनरली रेगुलर मोड पर होता है। तो आप अपना बिजनेस हैम्पर करके रेगुलर मोड पे नहीं जा सकते। लॉ इज ऑल्सो रेगुलर, वो भी बिजनेस हैम्पर होगा। तो अब वो आपको डिसाइड करना है कि मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, कि आपकी एब्सेंस में आपका बिजनेस रनिंग सिचुएशन में है, कि उसमें कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और अगर आप फ्यू आवर्स अपना स्टडी पे फोकस करते हो हायर एजुकेशन लेने के लिए, और आप अपना पैरेलली बिजनेस भी करो, तो दोनों कर सकते हैं। That is why I'm saying na ki everyone first complete their studies, then only should do Yes, the yes, job, yes. because then it really hampers a lot, because it keeps making you think like, should I leave, should I continue with that, should I be in my job only. So there are lots of things. Definitely. So, is there any query from your side? No, I told Kushi that I will soon join her to have a one Sure, session with my you. pleasure. She'll come to meet you personally. Yeah, firstly, I was like, I will, I told Kushi that because I continuously get calls from the factories and everything. So I was like, Kushi, I will come in the start, I will do my part and I will leave. But once it started, she was like, Ki, are you not, you should start. So I was like, me, I will take the full session. I will understand and hear everyone.
and then only I will, I will come to my part. So much. She was planning to leave. She was planning I to got it. leave अपना करके, and then she was planning to leave. Then I messaged her also कि अरे भाई कर लो ना, आपको जाना है, Jiju is waiting or something. Then she said shut up, I will You are attend the full married session. then. And then Yeah. I am married. It's in December. It will be two. It Okay, will be 2 years. that's great. So I love to Yeah, meet you. Come, let's have a definitely. I will. personal discussions too, and little bit. You can say a lunch I will or discuss about everything. fine. You have meet Kushi. I'm a little older version of her. If I think you I've same. told understand her I'm her, I'm you already that also older she's definitely my version. understand me. I've already told her that, she's the eldest and she's the only one who forces each one of us. We are like 10. So she's the eldest, we are 9. So, So the she forces one, everyone be independent. She was the one who told yeah. me this year that do internship in offline mode. No online mode internships allowed for you. Because Neither they will Papa not Mama to told learn. you whatever you want to do. But she's like, no, go for offline or else I'll kill you. Because see, I have seen in my life. See, we have a huge family. See, and there are many people in our family who support also. Like nobody is like against us, but they everyone according to their own age have their other Yes, experiences. yes. So I was like, She was forced by all the grandmothers to become a teacher. JBT कर बहन teacher लग और शादी कर देंगे तेरी. That, but she did not let us come on us. so All that's the other thing. 5 sisters will do whatever they want to do. If someone says anything, Umang Khatri is gonna kill everyone in the family. She has that kind of aura. Good. So somewhere she's doing BJMC. That was my second priority. The younger and elder than Khushi, she's doing law. So I was like, you all are somewhere, completing my Your part. So dreams, yes. go and yeah. Good. You can find your dreams to be fulfilled, in your own Yeah, sisters. from them, yeah. Yes, yes. Definitely. That's the reason I'm like you. I was pushing. She was never, she never leaves home. I guess you did that camp, no? She did one camp and she was not going, and I was NCC like, camp, you 10 have days. to go, you have to understand. And the night, same night, she called and she was like, please mujhe le jao, please. And I told Chachu Chachi also that you will not, go there and get her back, let her be there, उसको understand I करने did दो, not call my समझने दो. mom. I did not call my dad. I was calling her constantly all the 9 days. I don't want to. I don't want to stay here. I want to come back. Take me home. I can't stay here. This place is not hygienic. This is this. And she's like, nahi, rehna hai, rehna hai, rehna hai. You will It have was to her manage in birthday. all the situations. Sometimes, somewhere, even you will not get even the washroom neat and clean. And suppose say emergency is there, and n number of ants and some dust is there or garbage is there. What will you do? You will have to do pee over there because otherwise you will find problem for your We own don't body. have any option. No. Yes, it She means you will she was have the to one who manage. told me travel in metro. Travel in metro. Mhm. I am These a very practical pampered child. things, कि नहीं नहीं मैं तो I'll all go these everywhere in practical body. things make you, dependent also, more understandable also, going through every situation also. I myself loves to travel in bus, metros. My husband also sometimes, will tell me that you can take a cab, you can go. No, till now, when I have to go to my house, I will, from my office, I'll take the metro. If my brother is also, there, he's went to his office, then I will ask him that I'll meet you at that metro station, else I'll take the bus and I'll go, because I don't like to be, dependent on anyone. I'm happy on my own. I will, reach there. Don't worry about me. I will, whether I have to by walk, whether anything, but I Same will here. reach. Wherever I would So like to these go, I am things going are alone. really necessary. All the experiences are Yes. really necessary. Yes, absolutely correct. So she is your counselor, Kushi, your best counselor, Yeah, your she best is my advisor. counselor. She Yes. tells me everything. I am stuck in any problem, I'll call her. Umang Didi, this is happening. Umang Didi, this is happening. Anika was there when she got married. Anika knows how much I cried after her marriage. Ki she's going. And then she's like, Anika was like, Bhai, tu kyun ro rahi hai? Umang Didi is available on one call. So like And that they're just she half has an it. hour away. Yeah, It is she half lives an half hour an away. hour away.
and she comes home every day. Jiju, in fact, is so supportive. He tells me constantly. He sends He me was crazy. also like, ki Khushi should have told me also. I should have also joined the meeting. I didn't tell him because I know he'll not join, and he'll give me gyan, a lot of gyan. But he was here only. You know, when I started, I was like, you just go, please. He was just, should I No, come? no, Can yeah, I be yeah, there yeah. also? You can call No, him. uh, no. After I guess 5 or 10 minutes, he had to leave because he had a meeting with his CEO. So that is the reason कि start हुई या नहीं हुई. Can I be there for 5 minutes? मैंने कहा तुम जाओ, तुम बहुत ज़्यादा, because he's also experienced a lot of things. So I was there only पहले. अब इन लोगों के पास he is another option. He will guide her He कि has you done should not do MBA. this, you He should has do done this, everything. ये करो वो करो. So like, because we both know that for us, family members were there, but they were not that much supportive, or they did not themselves know, They have that know about knowledge that. about everything. Mhm. So now we are there for them. We know this, so you should ask us, and you should try everything. And She मैं यहाँ comes पे and fights सबको with I my will father. say that you should Always. She comes and fights with you my should father. not Let her do depend this. on anyone, because this is in now generation, this is very much needed, to be dependent on yourself. You should be able to crack things like this कि अच्छा वहां जाना है. You should not think यार गाड़ी नहीं है, ये नहीं है. The destination is to reach there. Correct. That's it. Whatever the modes would you like to use, just reach there. That should be the confirmed final decision. I have to go there, reach there on time, whether rickshaw, whether on your foot, whether barefooted, Yeah, whether metro, by car, if you have, because just the goal is to reach there. exactly. The most can be anything. I like your thoughts. Good. Very rare Thank thoughts you. have there actually. This is my experience. Yeah, I know it. As I told you, because you have gained such a experience, like you will beat everyone. And only with our own experience, even I'm beating with the psychiatrist, even I'm beating the other advisor. And why every time I'm saying my success ratio is 100%? Only simple reason I think you might have observed. It's a very simple reason why everyone is open to me, and at the end, I'm giving the final and the correct solution. This would be best. Say if one candidate she came here for the B.Ed, known resource person, BGMC candidate, मैंने कहा BGMC why B.Ed? आपको pedagogists मिलेंगे नहीं. See, that is my client. I might get benefit of say few peanuts, but वो peanuts मैंने नहीं लिए. मैंने बोला बेटा do one thing, एक बार करिए काउंसलिंग लो, and still अगर आप B.Ed के लिए interested हो, then I'll guide you. But I don't think so B.Ed would be the right path for you. Then interested again B.Ed है, तो again I have created a bridge between the BJMC and the B.Ed. How she will have. And also she was interested in the fine arts. She is having good skills in the fine arts. See, a candidate of BJMC, interest area is the fine arts, right? And she did lots and lots of work, and even she's having the Instagram, fine, but she wants to enter into B.Ed as a teaching profile. So huge discussions for 2 or 3 sessions, and then I did the research because I told just give me few days, and how we can connect with the fine arts and the this B.Ed. Fine. So this M.Ed, sorry, not M.Ed, that is the Master of Art Therapy, because again the counseling was in there, and what I found her, that was the way how that art therapy helpful in their B.Ed, and by choosing the fine arts and one subject from the social science on the basis of BJMC. So in both ways she will help herself in terms of entering any school, any institute, or she can run her own institute, or she can run her own business. So both the areas we have explored, right? So whosoever is getting, and the counseling is actually based upon detailed discussion. It is oral psychological, you can say. First the brainstorming session, and then the complete discussion. So that's how it is going on. Tuhina had raised her hand. Yeah, Tuhina. Yes, ma'am. Yes. You share an example just right now that this particular student of yours had different interests, right? So I wanted to know how did you like figure out what exactly is her core? What does she want to do? I really want to figure that out.
myself as well. So, like, is there, any test that you take or something like that? No test, no psychological test. I have the answer. I have the answer. Maybe Yes. the oral psychology part, and then she communicates a lot because I even discussed one of my problems with her. I took a perk that I'm, working as an intern, so I'll ask Yeah. some questions. So I asked her the question, and then she answered it so beautifully, so beautifully. She made me speak a lot, and anyways, I speak a lot. Then when I spoke and I poured out everything, then she told me, "You have the answers yourself." So Yes. she will make sure that you find the answer on your own, and then she'll be guiding you. So if you want to join, please, come and meet ma'am. She's the best. That will that is the only thing I will also say, that all the answers we have in within ourselves. Correct. When once we start talking now, will the other person will figure out that she's talking about everything, but these are the points that she talks about more. Yeah, there is enthu on her face. We within ourselves gives the signals. It's Yes. just a subconscious mind that वो सारी चीजें, because someone is saying something, someone is saying something, all these things are revolving around. वही And here confusion I would create. like to add one more point to Hina. Well said, Kushi. See, it is, as I told you, it's a brainstorming session. So one part is only listening. The other person, he or she will have to speak whatever the person wants to speak. So it is open, Yeah. right? From her or his own heart. And then within those questions, question arises. Then I ask the questions. Then again, next to next question, next to next question. So it is not pre-decided. Nothing. As this session was not pre-decided. Because if I'll make Yeah. up my mind, I will be unable to answer you, right? So as I told one point, I guess you might have listened that point. By God grace, I have sixth sense too, which I am not generally disclosing because now only Anika is there, who is the friend of Kushi, Umang, sister, Tuhina, and Hansika again, and Jatin Singh is also our, so it is just like I can say a family. That's why I'm saying. So it's a sixth sense, and the second is the feeling, the observation skills I'm having, and the next level is the knowledge of the industry, whether the education sector or in any industry, what is upcoming. So I keep myself updated, and what is right and what is wrong, that is in me. I used to say this should not be done, this should be done. Let me become the education minister, because what is happening, how the universities are doing, what the company is demanding, what the industries are demanding. So I should be at that place because I know what is going wrong. But the circumstances of the students, the circumstances of the parents, and see, it is very open session, open-ended session, questioning, 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 and then we will be able to understand, okay, this is the scenario, and then we will have to integrate all those points, and after that there would be a final solution. Sometimes within that session of 2 to 3 hours, or say 4 hours, the conclusion we can reach at the conclusion. Sometimes it will take another session, one more session, Yeah. right? And then sometimes one more session is related to some kind of research which I'll give to the student to give him or her more clarity what he or she is having the confusion. So let his or her chalk out, okay, whether I'm thinking on the right track or the wrong track. So it totally depends upon case to case. So every case is different. Every case, there is not even a single case which is of the similar nature. Since 2008, I'm just handling, and the last 2 years I make myself as a product, as a Rajni Basi in the industry, in the market, because again, I'll say the sixth sense. I was pretty sure nowadays what will happen, a counselor, one person should know the background of the counselor. So what I did 2 years back, even say 5 to 6 years back, I have already registered my domain rajnibasin.in. But 2 years back, I worked upon my website, my portfolio, and then I mentioned everything on my website. So let other know who am I, right? Who is Rajni Basin? And then on that basis, students used to, or the parents used to call, and sometimes what they're doing, they're just finding my face.
Sometimes they are just observing my face. Okay, this we look that we should go with Rajni Basin, right? So every person is actually finding me in different way. उनका जो मन करता है, कोई मेरा चेहरा देख के कंफर्टेबल फील करता है. जैसे मेरी वीडियोस यूट्यूब पे है, और यूट्यूब पे मैं वीडियो कोई मार्केटिंग गिमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे रही हूँ. मैं बहुत सिंपल वीडियो बना रही हूँ, जैसे मैं अभी इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं ना सेम वे आई एम इंटरेक्टिंग, और मेरी यूट्यूब पे वो वीडियोस है. अगर मैंने बीटेक की बात करी, तो बीटेक में एआई और सीएस, तो मैंने उनको भी समझाया कि इसमें मैं जाओ, कोर कंप्यूटिंग, कोर इंजीनियरिंग लो. तो वो भी यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल्स ने स्पेशली उसको फॉरवर्ड किया कि मैम आप एटलीस्ट कुछ तो एडवाइस कर रहे हो बच्चों को कि आप सीएस मत करो. सीएस पिट चुका है, सीएस में प्रोजेक्ट्स ही नहीं है. बीसीए बच्चा कर रहा है, बीटेक आईटी सीएस कर रहा है, प्रोजेक्ट्स ही नहीं है. कोर को आप एआई एमएल के साथ करो, ना कि बीटेक एआई और एमएल करो. देर इज नो सच इंजीनियरिंग ऑफ बीटेक एआई एमएल, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ डिग्री को बेचना और पैसा लेना. लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आता. जहां बच्चों को समझ में आता है, जो मेरे कॉन्टेक्ट में आते हैं, वो चेंज हो जाते हैं. अब किसी को मैथ्स, किसी के पास मैथ्स नहीं है, और हम ये चेक करते हैं कि उसको मैथ्स चाहिए या नहीं चाहिए, या उसको मैथ्स भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए. रिसेंटली के 2 केसेस है जिसमें हमने उनको मैथ्स के लिए भी बोला कि आप स्कूल चेंज करो. सेकंड, आप इनको पीसीएम दिलाओ, क्योंकि ये कर सकता है. जरूरी नहीं है कि 90% लाना है, 75-80% ब्रैकेट ओके है. सो हर एक चीज पे काम करना पड़ता है, समझना पड़ता है, हर एक केस को स्टडी करना पड़ता है, और फिर हम उसके बाद उसका सोल्यूशन देते हैं. और सोल्यूशन तभी आता है जब आप सामने से हमें एज अ फैमिली और मुझे एज अ बेस्ट फ्रेंड समझ पाओगे. वो आपका कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इवन प्रोफेशनल्स. एंड समटाइम्स प्रोफेशनल्स इन द टर्म्स जिनकी एज शायद 55 to 60 years भी होगी, मीन्स वो पेरेंट्स हैं और वो उनके अपने बिजनेसेस हैं. दे हैव सम आइडियाज एंड दे वांट टू डिस्कस विद मी. तो आई सेड कि हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे. तो बाकी तो भगवान, गॉड इज देयर. बिकॉज मैंने मेरा ये करियर काउंसलिंग की तरफ एंटर करने का कोई इंटेंशन नहीं था, बिकॉज माल प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन, रॉन्ग काउंसलिंग हो रही है, रॉन्ग गाइडेंस हो रही है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग. Yes, I do have my, this is my business, but I'm giving my knowledge, my experience. I am also charging, but अगर मैं ये चार्ज कर रही हूँ तो मैं किसी के लिए बेस्ट कर रही हूँ, और वो बेस्ट ये है कि उसके लिए कोई भी कहीं से भी डिग्री कर सकता है. मैं उसके लिए चार्ज कर रही हूँ, तो मेरा भी बिजनेस है. बट अगर किसी को राइट एडवाइस दे के आप बिजनेस करो, आई थिंक वो बिजनेस फ्लोरिश होता है. तो दैट इज वाई, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, I got every time 5 and stars, and my every review is a genuine review. कोई इसमें फेक नहीं है, नॉट इन रजनी एंड नॉट माई अदर कंपनीज. जैसे बोलते हैं ना लाइक्स बढ़ा दो या रिव्यूज, नो. ऑर्गेनिक जितने कैंडिडेट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, और वो खुद से अगर रिव्यू देंगे. और हाँ, हमारे कॉम्पिटिटर उसमें जानबूझ के वन कर देते हैं उसको डिग्रेड करने के लिए. तो फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके. क्योंकि जो स्टूडेंट हमें जानता है, पहचानता है, या जो उतना तो आज का जनरेशन नॉलेजेबल है कि वो ये देख सकता है कि अगर उसमें 1 स्टार भी आया है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा. तो कॉम्पिटिटर्स ये करते हैं काम, ठीक है. तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी आर डूइंग आवर बेस्ट. गॉड नोज, पब्लिक नोज, दोज हु आर इंटरेक्टिंग विद अस, कॉल करते हैं. काउंसलिंग्स उनको किसी की समझ नहीं आती है, जो समझना चाहते हैं, जो रियल काउंसलिंग लेना चाहते हैं, उनको हमारी काउंसलिंग समझ में आती है. तो दैट इज हाउ टू हिना वी आर डूइंग आवर वर्क. मैंने अपनी इनपुट दे दी है अपने वर्क से रिलेटेड. आई गेस अंडरस्टूड. Yes, ma'am. Understood. ओके, एनी मोर क्वेश्चन? No, ma'am. Not from my. ओके, हंसिका, डू यू हैव? No, ma'am. Okay, fine. So, Khushi, what to do now? I think the session, let's over this session. Rest of all the candidates, Yes. they have gone, they have left. So, one thing I would like to say, Miss Umang, I love to listen, and we will definitely meet Definitely soon. soon. Thank you so much. Bye. Take care. God Thank bless. you. Bye everyone. Bye. How much, ma'am? Thank you, ma'am.
पीयूष, आना एक सेकेंड.